हेलो फ्रेंड्स। सो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का जो सीरीज था उसमें हम आगे बढ़ते हुए आज हम फाइनली कुछ टूल्स का यूज़ करेंगे जो हमें हेल्प करता है मॉनिटरिंग में एंड गिविंग सम हिंट वेयर एंड हाउ टू मेक अ चेंज टू बूस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द क्वेरी। ओके। सो दिस इस सीरीज का नाम था स्टेप बाय स्टेप डेटा परफॉर्मेंस ट्यूनिंग गाइड बेसिकली। सो इसमें हम कवर कर रहे हैं, हम हर टॉपिक को हर चीज़ को इसमें लेके कवर कर रहे हैं। इसके पहले हमने 9-10 वीडियोस बना चुके हैं। लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड कुछ भी हो कमेंट करना ना भूलें प्लीज़, क्योंकि उससे हमें क्या होता है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है, क्या मिस कर दिया या फिर क्या हमने स्टेप नहीं ऐड किया या फिर कौन से फ्लो में हमें लाना है, उसका हमें कमेंट अगर मिलता है तो हम ज़्यादा ही बढ़िया और सटीक वीडियो बना पाएंगे जो फ्रेशर्स और L1 DBAs को हेल्प कर पाएंगे। तो इस वीडियो को बनाने का मोटो यही है कि जितने भी फ्रेशर्स मार्केट में आते हैं, DBA आते हैं, डेवलपर आते हैं, नए नए अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं IT इंडस्ट्री में, सोचते हैं कि भाई हमारा भी करियर अच्छा हो। सो उनके लिए हम ये करते हैं। ठीक है। एंड हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं लेकिन बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, अगर हमें कंटेंट सही लगा तब, क्योंकि सबको हर चीज़ नहीं आता है। एक बैग हम नहीं कहेंगे वी आर नोइंग एवरीथिंग एंड आई कैन ट्रेन यू एंड गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स टू डू दिस एक्टिविटी एंड दैट एक्टिविटी। सो एट द एंड मोटो यही रहता है कि आपको एक बेस्ट टिप्स दिया जाए, सटीक टिप्स दिया जाए, जिससे कि आपको अपने करियर को बूस्ट करने में, काम करने में तकलीफ ना हो, हेजिटेशंस ना हो मीटिंग्स में बैठने के बाद कि भाई हमें रिक्वायरमेंट जब गैदरिंग करनी है कुछ नए प्रोजेक्ट्स को लेकर के, डेटाबेस माइग्रेशंस का, अपग्रेड का, ट्यूनिंग का, पैचिंग का, हाइबिलिटीज एंड डीआर सॉल्यूशंस की अगर बात आप करें तो उसको हम लेके चलते हैं। लेकिन चलिए डीआर और हाइबिलिटीज की हम बात यहाँ नहीं करेंगे, हम यहाँ करेंगे परफॉर्मेंस की। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इज़ वेरी इजी, आपको गूगल पे सब कुछ मिल जाएंगे, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं और आप नेक्स्ट 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 करके आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। लेकिन जैसे परफॉर्मेंस ट्यूनिंग की बात आती है, बहुत कम और रेयरली मिलता है, जो सबके बस की बात नहीं है। वो जितना प्रैक्टिस आप करें, जिस तरह से मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल्स हम बनाते थे तो प्रैक्टिस करते करते सब आती थी, तो वैसे ही परफॉर्मेंस ट्यूनिंग जो है ये कोई इजी नहीं है कि आपको कोई किसी ने डॉक्यूमेंट बना के दे दिया, कोई वीडियो बना के दे दिया तो आपको बेनिफिट हो गया, नहीं। वो आपको स्टेप समझना पड़ेगा और बेनिफिट धीरे धीरे होगी, क्योंकि आप स्मॉल चेंजेस एट ए टाइम करते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा बल्क में चेंजेस कर दिया, आपको पता नहीं किस चेंज से क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या बेनिफिट हुआ। ओके। सो एक टिप्स ये भी है कि आप जो भी चेंजेस करने जा रहे हैं डेटाबेस सर्वर पे, तो वन चेंजेस एट ए टाइम एंड कीप आई ऑन द डेटाबेस परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर ऑफ द डेटाबेस एंड देन मेक अनदर चेंजेस। ओके। सो आगे हम बढ़ते हैं, गोइंग फॉरवर्ड एंड सी द एजेंडा हियर बेसिकली। ओके। तो ये एजेंडा में हमने बस प्रोसेस को रखा है, हम इसमें ओवरव्यू देखेंगे, क्या क्या रिसोर्सेज पे हमें ध्यान देना रहता है, कौन कौन सा टूल है, क्या कमांड लाइन है। ओके। तो ये बेसिक हम वेरी फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, सो हम उसको देखेंगे। एंड along विथ प्रैक्टिकल, मैं अब चाहता हूँ कि एक वीडियो बने और बंदा एंड टू एंड देखे और उसको समझ ले। बहुत लोग बोलते हैं कि बड़े वीडियो बनाने पे बंदे नहीं देखते हैं, लेकिन बंदे 50 वीडियो तो नहीं देख सकते ना। एक वीडियो अगर उनको स्टेप बाय स्टेप मिल जाता है, एंड टू एंड सॉल्यूशन मिल जाती है, तो डेफिनेटली मुझे विश्वास है कि कोई भी डेवलपर डीबीए होगा वो एंड टू एंड जरूर पक्का देखेगा, क्योंकि उसको पता है कि अब जो बंदा कंटेंट दे रहा है वो सही दे रहा है और वो हेल्पफुल है, ऐसे कुछ भी नहीं अपलोड कर दिया है। ओके। सो जब हम इम्प्लीमेंटेशन पार्ट करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं, इंफ्रा क्रिएट करते हैं, दैट इज हार्डवेयर लेवल, इंफ्रा लेवल, ऑपरेटिंग सिस्टम, देन आरडीबीएस लेवल, मींस जो आपका SQL सर्वर है, पोस्टग्रेस है, माई SQL है, ओरेकल है, उसको आप देखते हैं, उसमें ट्यूनिंग सब फाइन ट्यूनिंग करनी रहती है। देन डेटाबेस लेवल पे आप आते हैं, डेटाबेस आर्किटेक्चर स्कीमा पे आप आते हैं। देन आप क्वेरी लेवल पे आते हैं, TSQL है, PSQL है, PGSQL है, वट एवर आप जो यूज कर रहे हैं, समझे। तो ये जो चीजें हैं आपको हेल्प करेंगी कि भाई आप एक फ्लो में जा रहे हो और उस फ्लो के हिसाब से आप क्या कर रहे हो, ट्यूनिंग कर रहे हो।
क्योंकि आप कितना भी बढ़िया सर्वर ले लो, अगर वो प्रॉपर कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, सो SQL सर्वर और डेटा तो पूरा रिसोर्सेज खा जाएंगे। सो आपको फाइन ट्यूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। देन अगर बहुत ही गंदा क्वेरी लिखा हुआ है, आप कितना भी रिसोर्सेज दे दो, वो परफॉर्म करेगा ही नहीं करेगा, क्योंकि वो गंदा लिखा हुआ ही है। ज्वाइन कैसे यूज़ किया है, कॉलम्स कौन से यूज़ किए, उसका फ्लो कैसा है। तो ये इम्पेक्ट डालती है परफॉर्मेंस पे। ठीक है। सो यहाँ तक आपको सब कुछ सही सही समझ में आया कि ये फ्लो है, हम इसी फ्लो पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। और इन सब चीज़ों पे चेंजेस के लिए हमें क्या क्या टूल्स मार्केट में, कैसे हमें हेल्प मिलती है। तो हार्डवेयर के लिए तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, रैम सीपीयू एंड स्टोरेज के बारे में, रेड लेवल की बारे में पता होनी चाहिए। जो रेड लेवल होती है, रेड, वो भी आपको डेटाबेस के लिए बेनिफिशियल होती है। सो रेड भी जानना आपको बहुत आवश्यक है। ठीक है। तो रेड लेवल की बात होती है, रेड क्या होता है, व्हाट इज रेड? रेड स्टैंड्स फॉर रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। अगर कोई डिस्क करप्ट हो जाती है तो आप उसको निकाल के दूसरा डिस्क डाल सकते हैं और डेटा आपका रहेगा वहां पे, डेटा डिस्ट्रॉय नहीं होती है। अगर आप नया डिस्क लगा दे तो फिर क्या होता है, उसकी सेटिंग्स रहती है, स्ट्रिपिंग की, कॉपी मिरर की। ठीक है। इट इज अ टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट मल्टीपल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस एंड यूज देम विद अ सिंगल स्टोरेज मीडिया। मीन्स आप चार डिस्क को मिलाकर एक डिस्क बनाओगे, मीन्स आप उसमें रिसोर्स, खर्चे ज़्यादा होते हैं। कितने डिस्क आप लगाओगे उसमें से आप आधा यूज कर पाओगे। जो यहाँ कंपेरिजन हमने दिखाया है यहाँ पे सीट के हिसाब से, जो रेड लेवल की बात है। सो आप देख सकते हैं रेड जीरो में क्या है, दो डिस्क लगते हैं, आप 100% यूज कर सकते हो, लेकिन डेटा प्रोटेक्शन क्या है, नन है। हाई परफॉर्मेंस मिलेगा रीड राइट का, लेकिन डेटा प्रोटेक्शन नहीं है वहाँ पे। लेकिन जैसे रेड वन पे आप जाते हो, आप आधा डिस्क यूज कर सकते हो। एक डिस्क क्लियर हो गया तो आप दूसरा डिस्क पे डेटा आपका रहता है, मतलब उसका स्ट्रिपिंग रहती है, मिरर बनी रहती है, एंड वो मीडियम परफॉर्मेंस मिलता है। रेड वन जीरो जो है, आप चार डिस्क लगाते हो, 50% आप यूज करोगे। मीन्स अगर चार टीबी लगाया तो आप क्या 22 टीबी यूज कर पाओगे। एक एक डिस्क का जो लगा रहे हो आप, 4 टीबी, तो 2 टीबी यूज कर पाओगे। और हाई परफॉर्मेंस रीड राइट के लिए हो जाए, तो जिस पर टी लॉग रखते हैं और टेम्परेरी डीबी के डेटा फाइल्स रखते हैं, जो सिक्वल के लिए और किसी भी आर्टिकल के लिए बेनिफिशियल होता है। रेड वन जीरो होता है, इसमें भी आप 50% यूज करते हो, सिंगल फेल्योर पे आपको डेटा रिसाइड करता है। मीन्स आपको डेटा रिडन फेल्योर पे आपको डिस्क फेल्योर पे आपको डेटा मिलने वाली है। ऐसा नहीं कि डिस्क गया, डेटा गया। ओके, करप्शन जो होगी तो आपको डेटा रिसाइड करेगी। ठीक है। तो ये रेड लेवल की बात है यहाँ पे। ओके। तो ये हार्डवेयर लेवल की बात हो गई। मेमोरी कैसे सेट करनी है आपको, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या क्या सेटिंग्स करने हैं। देन आप RDBMS पे आते हो, तो हम इसका प्रैक्टिकल अभी देखने जा रहे हैं आगे, स्टेप बाय स्टेप हम दिखना है। इसके लिए पहले हमारा सेपरेट मैंने वीडियो बना के रखी है, जो आप देख सकते हैं। ओके। गोइंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट फ्लाइट। सो बैलेंसिंग दीज फोर, मेमोरी, CPU, स्टोरेज एंड नेटवर्क एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये फर्स्ट स्टेज है आपका। ये आपको ये सब चेक करनी पड़ेगी। अगर आपने इसे चेक नहीं की है तो फिर तो प्रॉब्लम है। अब कितना भी आप रिसोर्सेज दे दो, अगर ये प्रॉपर कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो यूजलेस है। समझ में आया ना, ये टोटली यूजलेस है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस मेमोरी, हाउ यू आर कीपिंग द मेमोरी, हाउ यू आर असाइनिंग द मेमोरी टू द एप्लीकेशंस, प्रोसेसर्स, स्टोरेज कैसे मैपिंग है आपकी, ड्राइव में डेटा कहाँ कहाँ कैसे रखा है आपने, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। नेटवर्क, नेटवर्क जो निक पोर्ट हो रहे हैं, NIC जो होते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसकी कैसी टीमिंग हुई है। आपने दो टीमिंग की है, दो नेटवर्क को लेकर टीमिंग की है नहीं की है, जो पोर्ट है GBPS पोर्ट है या नहीं है, नेटवर्क का फ्लो कैसा है, बैंडविड्थ कैसा लिया है आपने। ओके। सो ये सब फैक्टर्स है जो हार्डवेयर लेवल पे और OS लेवल पे आपको डेटाबेस परफॉर्मेंस इम्पेक्ट डालती है। ओके। देन आते हैं हमें फ्लो पे, कैसे हम परफॉर्मेंस को बूस्ट करना है। बेसिकली परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए आपके पास एक एक प्लान होना चाहिए, एक रूटीन चेकअप होना चाहिए, जिसे मॉनिटर किया आपने, देन ट्रबल शूटिंग किया, ट्यूनिंग किया, टेस्टिंग किया, एंड देन डिप्लॉयमेंट किया। Blindly you cannot make any changes on production databases. You just test in a QA and UAT database server. ये आपको ध्यान रखने की चीज़ है। अगर आपने ये चीज़ ध्यान नहीं रखा, सो भैया ब्लंडर मिस्टेक होगी और फिर आपकी नौकरी भी जा सकती है। सो कुछ भी चेंजेस करने से पहले टेक अ बैकअप, थिंक अबाउट द बैकअप, मॉनिटरिंग एंड द प्रोसेस, तब जा करके आपका ये ट्यूनिंग का जो प्रोसेस है आप कंप्लीट कर पाओगे, द चैन ऑफ द ट्यूनिंग ऑफ द डेटाबेस सर्वर। ओके। मॉनिटरिंग पार्ट में आपके पास डिफ़ॉल्ट टूल्स हैं, मैट्रिसेस लिस्ट आउट करनी पड़ेंगी,
एंड उसके हिसाब से फिर आप आगे बढ़ सकते हो। तो कलेक्ट द मैट्रिसेस, स्टोरेज टाइम स्टैम्प एंड कैलकुलेशन द बेसलाइन मेजरमेंट। बेसलाइन मेजरमेंट में जो आपने सेट किया है कि भाई इतना हमने सेट किया है, इस से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, बी रेडी फॉर ट्रबल शूटिंग। इफ यू हैव डन एनी मिस्टेक्स then you have to roll back or do the troubleshooting why it is impacting the performance. Okay, नेक्स्ट आती है ट्यूनिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। जो आपने प्रॉब्लम देखा है उसके लिए आपने डेटा कलेक्ट किया है, स्टैट्स कलेक्ट किया है, देन आप क्वेरी इंप्रूवमेंट के लिए जाते हैं। आपका अप्रोच क्या होगा कि बैकअप, अगर कोई प्रोसीजर ट्यून करने जा रहे हैं तो पहले प्रोसीजर का बैकअप आप ले लो। इफ यू आर गोइंग टू मॉडिफाई मेकिंग सम चेंजेस, प्लीज 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 टेक अ बैकअप। डू नॉट फॉरगेट to take a backup of any database objects before going to make any change on the database level. Okay, then you have to test that one. If you have made any changes from server level, database level, query level, just test that, monitor that the behaviors of that queries, and then you go to the production, or you can do a UAT testing pehle and then go to the production. If you at UAT sign off you got, देन यू कैन गो द प्रोडक्शन। सो हर कंपनी का अलग अलग प्रोसेस होता है एंड उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट right? अगर आपने सबका ध्यान नहीं रखा तो डिजास्टर हो सकती है। सो प्लीज बी प्रिपेयर फॉर डिजास्टर। ओके, बिकॉज इफ हैव डन अ ब्लंडर मिस्टेक्स then no one going to save your job, your position. Everyone can raise their hand. Okay, so storage, memory and network we have already discussed. Then we have finding of key problems using the dynamic management view, DMV, dynamic management view. Okay, so it will help you to take a point time interval information usually exposes cumulative data and most be stored in a snapshot or delta comparison. Extended event using diagnostic, and then extended event you can use that replacing the profiler and trace files. Okay, so we are going to see these tools and all. Before going to further, we need to know different other tools like SSMS, how SSMS help us to monitor tuning the databases. Okay, this is a GUI tool, that is graphical user interface tool to work on database servers. Then we have activity monitor. If you do not know the any query how can find, then you just go to the activity monitor and see where and how we can see the data. Let's go to the activity monitor first. Okay, now we have a tool. Okay, that is SSMS. So we are going to discuss about activity monitor. So here just click on server. Sorry, and see this is activity monitor, right? Click on this. This is your activity monitor. Here you can see all the processes it is running on database. Command waits, see waiting time, database name, user login name and application name, see here. So this is about the activity monitor. Now resource waits. So waiting resource, waiting category, backup, IO, buffer latch, compilation latch, logging memory, network, and others. So we can also see anywhere type here, any queries waiting for these waits. Okay, then we work accordingly. Then we have a read write IO.
on which data file, log file data is written. Okay, so you can see here all the details. Then recently expensive queries, you can see the expenses query here, and then you can plan accordingly to optimize the temp db and all the user db. Okay, and then active expensive query, so there is no current sessions, no any connections and transactions and request here, so we are not able to get the data here. So this is whole about activity monitor, the default tool introduced in Microsoft. Okay, it's very helpful. Okay, now next is performance monitor. So performance monitor is a Windows application tool that will help you to check that all the stats, data caching, performance, whatever. So let's see about that performance monitor. So go to the server and just go to the run command and type performance. So this is a performance. See here the performance monitor. You can see memory, network, physical disk, and processor information. See, if you want, then you can go to the monitor dashboards and you can add here. See, so we are going to add about the SQL server. So go to the MS SQL server here. Ta, ta, ta. Sorry. So here is you can see about the databases. See what are the stats here? Bulk copy row per second, data file size in KB, DVC logical scan byte. Okay, so this is about the total data you can collect from here. Log growth, transactions, sync. Okay, now I'm just going to see about the data SQL Server memory. Okay, memory manager or buffer manager. So you can see here connection memory, data cache memory, free memory. So you can add here. Okay, and you can see connection memory if you want, add here. Okay, and optimize memory recovery server, no, not required. Total server memory you can get from here, target or total server memory. Okay, then we have a query store, you can use that. Too many stats, if you not know the command line, you can start monitoring from here. Okay, see about always on replica devices. See replica sent per byte and all. So you can see here send to replica per second. So इस तरह से आप यहाँ पे आप ऐड कर देंगे and then you can see the stats and all. See, just getting started here. We can just modify from here also if you want to modify these colors and all. You can modify from here for reading the stats and all. Okay, see, or other you can use that one. Okay, see this is our processor, so you can use data style here. Da, da, da. This is the default one, and you can change the color here. Processor, let's yellow. See, okay. So this way
you can use performance also. You can add a stats and see. You can collect data set, collect data set here. You can create reports. See, these are defined. You can create here. Okay, new and then start working here. Okay, means db mon and create using the template. See, here is this default performance diagnostic. See, next, and this is the path where you are using the perf log. Next, and run as default. You can use choose here, save, start data collection now. Okay, see, it will start data collecting now. See, it is started. Okay, you can see the latest reports and all. See, it is collecting data 60 seconds. Okay, and then you can get the report. So this way you can use perfmon, right? Let's minimize this. It's collecting the data. We have done activity monitor. Next. Mhm. Profiler. So it is a very huge tool. You cannot use directly profiler on the production server, right? So be careful before going to use profiler. How can you use the profiler? Just go to the tools. Then we have a SQL Server profiler. Now you to connect the database. Then you have a templates. Let's dbmon. Okay. You have a template here, a standard tuning, SPs, duration, log, whatever. Okay, you can just change here as per your requirement. Then you have to save the file. Save the file, the trash files. Okay, or else you can add in a table where you can want to stack collect the stats in a table as a table. So you can just connect the database, select the database name here, and then schema name, and then a table name. Okay, so you can collect that data in a table, not in a test files. Okay, then you can enable the start and stop. Max set you can set okay, in thousands how many rows required. This is the limitations. Okay, so we can say that 10,000. Okay, or you can set default. Enable the trace time and all. When if you are not in office, then you can set an alert and it will start, and duration for in a minute, 60 minute, 15 minute, whatever. If you if you want that you are not aware and you get a call or call from the application team that is slow database at 9 p.m. and you are not in office, so you have just going to capture the data. You just sit here 9 p.m. Okay, and stop after this. Okay, or you can enable dash and stop after this time. Okay, so this is also a way to set. Now see the performance string. RPC means remote procedure call completion, stored procedure statement completion, and batch completion by default. Then you have to just column filter. Here the database name, the user name, the user database, whatever the user database is, you're going to pass here to limit the traces. Okay, and then you can execute to run. So see, it is started and capturing the logs. See, if you want to see capture the logs, you can also execute and see that logs. Okay, so this is about the profiler. Okay, and profiler traces file you can read in database tuning advisor. There's a database tuning advisor, so you have to just check this one, connect this,
And we have already discussed many times about this data tuning advisor. Okay, the system is busy because we have run profiler. See, due to this profiler, system memory is going ahead. So let's just stop this, disconnect. It is still running. Wait. So basically, profiler is taking resource utilizing tool basically. Okay, so please do not use blindly. Okay, do not use blindly. Just you check the resources, the subutilization, and then enable the trace recording and all. Okay, see. So this is about the trace files. You can just select here, then file table where you have kept the trace files or query store you can change. Analysis the database name here. Select the database name where the load you want the load a small load. Then you just select the database name. Then the table name if you exactly know the table name and all. So you can select the table name. If you got all the table queries, then you can select all. Okay, and then you see the tuning options, non-cluster indexes, include the filtered indexes, recommendation and all. And then you can have to just start this execution. Okay, so we not selected the files, that's why it's not going to execute what previously we have done this. So you can see that there's a recommendation file. Okay, and how it boosts improving the 60% after creating this recommendation target indexes and all. And you can see the reports here. Okay, so this is about the tools, performance tools like DTA and profilers, activity monitor. Okay, going forward. So you see the DTA also, data tuning advisor engine. Okay, now, so what we get in data tuning advisor? This recommended, analyzer, recommended, allow, provide, consider, and tune. So this is a step, or this is the other way. Okay, designing uh, basically query flow, basically the online OLTP, OLAP. Okay, it all be all heavy load and all. We can just check that one and we can customize that. Okay, limitations and restrictions of DTA. It cannot be add and drop unique indexes. Okay, indexes that enforce primary key and unique constraint. Okay, means you can do on non-cluster indexes, not on primary key. Okay, now coming to the main topic, that is DMV, dynamic management view. Very less people are confident on this, and this is a basically command line tool that we can get our data. So regular enhancement into after 2005 in by Microsoft, adding new DMVs to capture the stats data and all. Now in 2019 we have a 229 DMVs. See the number of DMVs. Okay, so it can if you can write queries, you don't can use for if you want to write, it is easy because you have to just need to know the we can say that the syntax name basically, and you can get an help and you can do writing and monitoring. Okay, so there's a lots of data basically in SQL Server. Okay, and DMVs that will capturing the data, the cumulative data. So we have just categorized some DMV's name here. How? This is check tracking, CLR, cryptography, data mirroring, database exclusion, execution and functions, extended event procedure, DMVs, full text search, file text, IO functions, index functions, and functions, query notifications, replications, resource governance, service broker, SQL OS, and transactions and function securities. So you can get these type of categories in SQL Server DMVs and
that will help you. You have to just know. I have already pasted and I'll also share that. So here is very frequently used DMV that we use in our daily day-to-day activities like activity statements, transactions, IO, performance weights, and other HADR DMVs that we use in our regular day-to-day activity. Okay, so we will go in deep. The another session of DMVs in which we use these all DMVs here. Okay, in practical. So now let's an example of DMVs here. Just stop this DTA. We have seen that. And the activity monitor we already seen that. So now go for the DMVs. So sorry. Let's see. Yeah. Select star from sys dot dm underscore sorry exe execution, and we can say connections. Then just copy and modify all these things. We can show you. Go sorry, select paste, then connections, then request sorry sessions, then go, and then we have a request. So it totally depend on each other. Request, we have a request ID, session ID, connection ID. See here, just we have to focus on these two, making a join on database. If you're going to create any reports, so see, we have a session ID, we have a session ID. So on session ID you can connect and get the details, which user from where you are getting the connections. Okay, connection ID, then you have a sessions, user ID and name. Okay, and then you have request, from where you are getting the requests, the status of the request, sleeping background. Okay, running, runnable, or waiting from resources. So here is the wait type. You can see here last wait or wait type. Okay, so this is about the DMVs. Two main DMVs in market. I can show you later in the class for the DMVs. Okay, two main DMVs, more than 229 to 30. Okay, so we will see about 50 frequently used DMV. So stay tuned for that class. That is very important class. Okay, now we have a DMV. So how can you performance troubleshooting categories? Okay, so that's execute environment, execute details, transaction informations, query processor components, and temp DB. So what is temp DB? This is a temporary database in SQL Server. Okay, execution environment, connect, get sessions, and make request. Session makes request. Whatever I've seen here, already shown here. See, first connections, then sessions, then request. So session ID will be same, but request ID is not same. See, okay. Now going forward to this. So this is about, see, 22 22. See, I've shown you the graphic. Sorry, 52. Okay, then you can get a queries passing that what is the command there and all. So you just pass their where conditions. Then transactions, explicitly, implicitly associated with your sessions or not. You can check from this command line. Okay, that is the transaction trans data transactions. You can get all the time and all, begin and complete the task. Okay, begin trans and yeah, that one. So you can also log that details and all. Query processing. Okay, then you check the running commands. Okay, task ID and workers and all. Blocking, if you're getting blockings and all, use NoSQL and all.
So the question why get query is getting slow. This is logged out waiting for something. See with type CX packet lock memory. Okay, that is shared. Then focus on temp.db. Okay, so whatever the temporary activity you are doing, that depends on temporary DB configuration and all. Okay, so temp.db, you know about the temp.db temporary files. Okay, so temporary DB is like you can say that you can create temporary drive. Sorry, temporary tables. Like we can say that you are storing some data for temporary for the sessions. Just here you can just select star into hash dot rq from. Okay, we are keeping all columns basically this one. Okay, you get here, insert it, and then you can just select. Sorry, see, get the data. Okay, now we can create another one and start selecting. I'm just explaining different thing here. Let me get the data and see why we are getting the error. Because temporary tables, temp tables in SQL Server or anywhere, temporary table, two type of temporary table, local and global. Local means if you are getting single hash tables, TBL or table, means it will get your data in sessions only. Okay, the connected sessions and all, not for other sessions. Double hash TBL, it is global temporary tables. Okay, you can use multiple times. Any user can use that one. Okay, the difference between temporary, local and global tables. Okay, that's the things. So you just think about this temporary tables, how it is using and staying in the database. Okay. Mhm. Okay, so this is about the temporaries, this task and all you can see, or you can also check from here. Go to the database server, systemdb, and then temporary database, and I have to just going to show this table name what we have created. Okay, because session is not closed here, just still open. Da, 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 dee, da. Not showing here. It should be. See here. Okay, this is our temporary tables what we have created. Okay, as we create the close these connections, we do not get this temporary table. Just close this session. Complete. Just refresh. See, gone. Means it will not stay after session closed. Okay, because it's a local temporary tables. But if you use global temporary tables, it will decide after closing the session. Means other users can use, other sessions can use that temporary global temporary tables. Right? Got the difference between temporary tables? Okay. Now next. Extended events. So it is a replacement of profiler. You can capture the extended events and see the flow and all. So there is default extended events.
always on system monitor telemetry extended events, or we can also define uh, user defined sessions and all. So new problem for diagnostic, how can you use it? More complex systems need to reduce performance impact diagnostic, desire to more detailed information, need to find unexpected interaction of the queries and all. Here is that some valuable extended events. So that is scalability, extended events are dynamic, cross process event track integrated with Windows events. Okay, and new capabilities in Daniel, that is user interface, advanced and wizard. You have GUI part. Okay, you can manage that analysis and replicate the data, right? And you have the flow basically. So this is module, page packages, events, target, actions, type, predicates, and map. So object result, what is events? All known or unknown points and execution, unique schema and events. Actions can add any events, add data, events, payload. Target meaning consumers supports async synchronize storage, like you can store the data, trace files, predicates, runtime filters, boolean expressions, local and global data, states count and min max. And next, catalog, collecting data, the event sessions, like enable events, target and buffer, actions and predicates. Buffers means where you're copying the data in a buffer or any storage. We can see here. Okay. Next is catalogs. Here the dynamic views you can use that. That is server event sessions target. You can this is a DMVs for extended events. Okay, and extended event, just here customize. Here we have customized this. We can use that DMVs also. DMEXE sessions. Okay, EXE means extended events, denoted. Okay, so now going for extended events, C SQL Server here, just minimize this, go to the management, then we have a extended event. See here, and this is the tool. See here, how can you use that? You can just create here using the wizard. See, okay, and you can create all these things. Okay, see the next, and you can just name the sessions dbmon, the daemon. Okay, start at session server start. Okay, you can set that manual, you can keep that one. Hit next, then you just check the catalogs, what is you are going to template and all. So you can use the template, just because we are going for tuning part and all. So here see, like profiler, you are getting the all the profile. This is the profiler evaluation here. So you are going for tuning, so you same, you are getting all the details here. Just select this one, tuning part, hit next, and see here you get all the what you want to capture here. Okay, RPC completion, store process completion, SQL batch completion. No, I'm not going to filter anything here. Okay, from the libraries I'm going for by default. Then you have database ID, database name. You can just check box what columns you want, what data you want to capture here. Okay, here there's a name. Okay, now these descriptions why you need this, and if you don't know, then you have to just read all these details here. Okay, then you can create filter here if you want. See, by default filter is greater than 4, means not using or going to trace for system users. Okay, data, sorry, system databases. And then you have to just where to store, collect the data here, specify here. Okay, any server or any uh, ring buffer target. Okay, ring buffer in the memory, you just set the memory and all, or you can just set server name, a browser, and the MB files and all. Okay, so this is a synchronize, or this is a asynchronized basically.
target. Okay, you can get the database size here, number of files per GB, and it's auto destroyed. Okay, see, this is created, and now go to the finish part, right? Finish part, start the session. Okay, and watch active data. See, close. Now we have implemented here. See the daemon. Okay, now active data here. Okay, and also you can see the package here. Okay, this is active data. It will capture all the hits. If you want, then you just click here, or just you have to just run some commands here. Let's do this. Now see here, it will, sorry, we can close this and see the live data here. See the live data, batch completion and all. Whatever you run, you can see here the duration and all. See the username and all. See the batch completion. Okay, you can see the live data and all, right? So this is total about the performance tuning steps and the tools. Okay, hope you like this. Okay, so this is all about that extended events, profiler, and DT DMVs. So hope you like this. Thank you for watching. Please do not forget share, subscribe and comment. Okay, आपका कमेंट जो होगा हमें बूस्ट करेगा काम करने के लिए. ओके, थैंक यू. So thank you once again for watching this video, staying with us. Thank you. धन्यवाद. Bye bye. Take care.